I'm Rajvi. Sunscreen is only for females. I don't even want to hear the question. You should apply sunscreen every day. You don't need to apply sunscreen on a cloudy day. Can you tell me the full form of SPF? Sun. Wait, I don't know. SPF, right? Super excited to have you now. Very excited to be हाय गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है बिकॉज आई गॉट अ स्पेशल अपॉर्चुनिटी टू अटेंड द लॉन्च ऑफ गार्नियर सुपर यूवी इनविजिबल सनस्क्रीन। सो लेट्स गो इनसाइड एंड सी व्हाट्स गोना हैपन। तो अंदर जाते ही आई कुड सी द अमेजिंग अरेंजमेंट्स दैट दे हैव मेड। साथ ही साथ आई मेट सम ऑफ माय फेवरेट क्रिएटर्स देयर एंड आई हैड अमेजिंग गेम्स देयर विद देम, बट उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। फॉर द टाइम बीइंग कम विथ मी, लेट्स गो इनसाइड। The event started with a dance performance and we really enjoyed the performance, but uske baad tha the main part. The sun, giver of life, also holds a hidden danger, a danger that's both silent and powerful. Its harmful UV rays carry a threat. The invisible UV particles penetrate deeper than we realize, reaching the very layers of our skin. These rays affect our skin, causing dark spots, sunspots, melasma, aging, and in extreme conditions, even cancer. Yes, you heard it right. UV rays are extremely harmful for our skin. इसलिए गार्नियर ने लॉन्च किया है इट्स सुपर यूवी इनविजिबल सीरम सनस्क्रीन, जिसमें है SPF 50 and PA++++. That means the highest level of sun protection. It also has vitamin C that corrects the dark spots. Because of a unique air lock technology, ensuring there is no white cast, no stickiness, and easy absorption into the skin. And additionally, it's a product that's made in India, made for India, for Indian skin tones, with an extremely lightweight texture. But the best part is its accessibility. Its price point. It's priced at a killer ₹349. Yes, बिल्कुल सही सुना आपने। इस प्रोडक्ट का प्राइस है सिर्फ ₹349। The second hero we have, and a real differentiator, is the Invisible Air Mist Sunscreen. Yes, this is also broad spectrum, SPF 50, PA4+, light as air, no white cast, no stickiness, but it's got something very unique. Let me show you. It is a product that can be used anywhere, anytime, even over makeup. As easy as shake, 3, 2, 1, done. वाओ, दैट्स इंटरेस्टिंग है ना। मैं तो इसको ट्राई डेफिनेटली करूंगा, बट उससे पहले मिल लेते हैं हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट से, पूजा हेगड़े एंड वेदांग रैना। Welcome Vedang, how does it feel to be here? Oh, I'm very happy, very excited to be associated with Garnier. अब इतना सब कुछ सुनने के बाद आई हैड टू ट्राई इट माई सेल्फ। और सच बताऊं तो एज यू कैन सी द प्रोडक्ट इज रियली लाइट वेट। हाँ, you can see the consistency. It's very thin and liquid and it absorbs very quickly. And they were right. There is no white cast at all. Now this is the second product, Garnier Super UV Invisible Air Mist Sunscreen. Serum की तरह इसमें भी same qualities है, but the best part is you can apply this anytime, anywhere, even over your makeup. और हाँ, एक और interesting चीज, I am really thankful to all the Garnier representatives there जिन्होंने मुझे टॉनिक वाटर टेस्ट के थ्रू दिखाया कि how this sunscreen blocks the UV rays and it was so interesting. मैं चाहता हूँ मेरे साथ साथ आप भी ये देखो। यहाँ आप क्लियरली देख सकते हो टॉनिक वाटर में UV टॉर्च की लाइट क्लियरली आ रही है ना। अब सनस्क्रीन को रखने के बाद वो लाइट नहीं आ पा रहा है बिकॉज द सनस्क्रीन इज ब्लॉकिंग द UV rays. सी अगेन, दिस इज मैजिक। एक्चुअली मैजिक नहीं, दिस इज द साइंस। नाउ लेट्स सी हाउ मच माय फ्रेंड्स नो अबाउट सनस्क्रीन। वी आर प्लेइंग facts or myths. Sunscreen is only for females because Of they course have. not. Okay. Of course not. That's a myth, right? Yeah. Everyone I don't knows even want to hear the question. It is not okay. You should apply sunscreen every day, irrespective of whether you're going out or you're staying indoors. Okay, lastly, can you tell me full form of SPF? Sun. Wait, I don't know. SPF, right? Sun protection factor. Yes, correct. Bingo. And that was such a fun game. और उसके बाद finally I got my personalized bottle of sunscreen. This was so cool.
So this is all about it. आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, and I'll see you in the next video.